Let's straight away begin with Jharkhand, where 3 people have lost their lives while several others have been injured after a couple of cable cars in a ropeway collided near a temple in Jharkhand's Deoghar district. In fact, tragically, one person died during the rescue operations, even though he was pulled out of the cable car. According to the Deoghar DC, an NDRF team has been working since Sunday night and they have managed to rescue around 11 people so far. Officials say that as per the initial investigation, it looks like that the incident took place due to technical snag. In fact, these are some live visuals that we are getting for our viewers from Deoghar, where rescue operations are still in full swing. People are still stuck mid-air for the last 50 hours now. In fact, let me go across to Saket for the latest. Saket, हम अपने दर्शकों को लगातार जो ताज़ा तस्वीरें हैं देवघर से वो दिखा रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि रेस्क्यू टीम्स अभी भी लगी हुई हैं अपने काम में और कोशिश कर रही हैं उन 10 लोगों को बचाने की जो कि पिछले 50 घंटों से फंसे हुए हैं। कितना आगे बढ़ा है ये पूरा काम, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो 15 लोग जो केबल कार है उसके अंदर फंसे हुए थे, लेकिन आज सुबह से अब तक 8 लोगों को यहाँ पर निकाल लिया गया हुआ। मैं तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। आप देखिए, अभी भी जो एयरफोर्स का जो जवान है वो आप देखिए किस तरह से वहाँ पर एयरलिफ्ट कर रहा है। जो लोग केबल कार में फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश में सुबह से 2 हेलीकॉप्टर्स, जो MI हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, वो यहाँ पर लगा हुआ है और 8 लोगों को सुबह से निकाल लिया गया है यहाँ पर केबल कार के अंदर से। यानी कि अब सिर्फ 7 लोग अभी केबल कार के अंदर फंसे हुए हैं जिनको कि निकालना है। जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि सबको जो केबल कार में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब कितना वक्त लगता है देखना होगा, क्योंकि काफ़ी कह सकते हैं चुनौतियों भरा है यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना। क्योंकि जिस जगह पे आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ये केबल कार फंसी हुई है, जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ नीचे लगभग 2500 फीट की गहराई है। ऐसे में वहाँ से लोगों को निकाल लेना, हेलीकॉप्टर पर उन लोगों को एयरलिफ्ट कर लेना, ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसी में कल एक हादसा भी हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी, हाथ स्लिप कर गया था उनका हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान। तो ऐसे में वो घटना फिर से ना हो, इसको देखते हुए जो एयरफोर्स के भी जवान हैं वो फूक कर कदम रख रहे हैं और एक लोगों को काफ़ी सतर्कता से वहाँ से निकाला जा रहा है। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कर लिया जाएगा, क्योंकि सुबह करीब 7 बजे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ आज, और उसके बाद से 8 लोगों को जब निकाल लिया गया है तो माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में बाकी बचे 7 लोगों को भी निकाला जाएगा। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो जल्द से जल्द इन लोगों को भी बाहर निकाला जाएगा। और जो लोग निकल रहे हैं उनके परिजन भी इसे लेकर काफ़ी खुश है। जो उनके घर के लोग हैं वो जो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मौजूद थे, बिना खाए पिए रात दिन जग कर यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और जो लोगों को निकाला जा रहा है, जिन लोगों को इन केबल कार से, उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है और उसके बाद उन्हें फिर घर जाने दिया जा रहा है। तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक मिनट कुछ यहाँ पर चल रहा है। टाइम्स नाउ लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जी राइट। साकेत, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। 50 घंटे तक ये लोग इस केबल कार में, ये वेरियस केबल कार्स में स्टक थे। NDRF फोर्सेस आर ऑन द जॉब, लेकिन उनकी तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ टेम्पल, इट्स अ पॉपुलर प्लेस फॉर वेयर टूरिस्ट एक्चुअली कम। तो ये जो टेक्निकल स्नैग का हवाला दिया जा रहा है, इसके बारे में ऑफिशियल से कोई बातचीत हुई है? क्यों हुई ये घटना, इसकी कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए, बिल्कुल जो ये दुर्घटना हुई है उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि जो ये केबल कार, जो रोपवे है, ये इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था समय पर। और ये आरोप खुद बीजेपी के जो यहाँ से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी लगाया है कि मेंटेनेंस का अभाव था। और साथ ही साथ जो यहाँ पर
रोपवे ऑपरेट करते हैं, जो जिस एजेंसी को ये रोपवे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि एक साथ, चूंकि जिस दिन ये घटना हुई है वो रामनवमी का दिन था और उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ रोपवे पर। क्योंकि आपको मैं तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, जो पिक है जहाँ पर ये रोपवे पहुँचता है, वहाँ पर एक मंदिर है और लोग वहीं पर जाते हैं इस रोपवे के द्वारा, और वहाँ पर मंदिर में दर्शन भी होता है और दूसरी तरफ एक वहाँ का जो खूबसूरती है वो देखने लोग यहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे में उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जो जानकारी दी जा रही है कि जो रोपवे ऑपरेटर है उस दिन कुछ ज़्यादा ट्रॉली इस पर चला रहे थे, यानी कि जितना लिमिट है उससे ज़्यादा ट्रॉलियाँ एक साथ इस रोपवे पर चल रही थी और जो एक एक ट्रॉली में बैठने की कैपेसिटी है लोगों की, उससे भी अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है। 4 लोगों की कैपेसिटी है एक ट्रॉली में, माना जा रहा है कि 5 से 6 लोगों को एक ट्रॉली में बैठाकर भेजा जा रहा था, चूंकि भीड़ ज़्यादा थी। और इसी दरमियान जो है, जो इलाका आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ट्रॉलियाँ अभी झूल रही है, वहाँ पर ये ट्रॉलियाँ आपस में टकरा गई थी और जिसके बाद 2 ट्रॉलियाँ नीचे गिर गई थी टूटकर, और उसके बाद से लगातार जो है लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं पिछले 50 घंटे से और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और कल सुबह 5 बजे से ही वायुसेना ने मोर्चा संभाला था और उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और कल शाम तक 32 लोगों को निकाला गया था। हालांकि अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था और आज सुबह से फिर से जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है तो 8 लोगों को निकाल लिया गया है सकुशल। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है 2 से 3 घंटे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और सभी लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन अब जांच की बात है, चूंकि जो झारखंड सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है कि मेंटेनेंस का अभाव था, मेंटेनेंस सही समय पर इस रोपवे का नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी उसके तरफ से भी काफी गलतियां हुई है, जिसके कारण आज इतनी जानें आफत में फंसी थी और 3 लोगों की मौत भी हुई है। जी जी साकेत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और ग्राउंड से हमें अपडेट्स देने के लिए। अ वेरी वेरी सीरियस मैटर एंड ऑफ कोर्स इट नीड्स अ थरो प्रोब, बट फॉर नाउ वी आर आल्सो बीइंग जॉइंड बाय Naveen Bhatnagar, former DIG of NDRF. Mr. Bhatnagar, good morning and thank you so much for taking the time out. From you, I want to understand the technicalities that are involved in the entire rescue operations of such kind, because we are seeing that teams are on job for the last 50 hours, but still it's not finished. It's still underway. What are the kind of challenges that the teams face in such kind of operations? In fact, is a great challenge because they were not ready. There was no safety measures were taken by the agency or the government. Whereas in this situation, where the manpower or Shradhalus are going in a very huge manner, then strict control should be there, but they have failed to do it. Anyhow, the agency also requires this action because they have not done the maintenance and all these things. And overloaded they have done. So what happened? This ropeway wire, as well as the particular that trolley, it was smashed each other. That is why this heavy loss was there. Now the problem comes regarding this rescue operation from the helicopter. Is the only way to rescue the people, because in this situation, no other aid can be approached there, because sky ladders are there, because a lot of the ballooning systems are there with us, but it is not possible to fix up all these things in that particular area. So without that things is not possible. The only possible is this, that through a helicopter we should give them food, water and other things, and through this bucket, air safety buckets, from there we can escape the people, we can rescue the people. Otherwise, no other means. Yes. And even then, on the roadway, by the chair knot system or with the safety devices system, we can do rescue, but one by one. But there is a risk again, because the wire already damaged. So in that condition, we can't take this risk. Otherwise, through this, our rescuers or the NDRF people or our Jawans, we can do it very easily.
by the chair knot system or the safety belt Right. or harness. Mr. Bhatnagar, I'd like to understand this one thing. We are talking about this terrain that you were just mentioning about. In fact, we are playing out those visuals also for our viewers for the better understanding of what are, the Indian Air Force forces are really looking at and how exactly is the rescue operation really taking place. But when it comes to these constant checks so that such an incident is not, is averted, is the Indian Air Force or the NDRF in constant checks with the agency here? We are talking about the Trikut Hill Ropeway service, which is responsible for this particular ropeway. There is a technical snag that was reported. Is there no officer or probably no licensing that really happens so that, there are constant audits that are done so that such an instance is averted? It is must. Constant audit is must. There should be three type of audits. One should be from the National Safety Council. One audit from there. Then state government, they should also do the audit. Then fire audit is required. Then on the general basis, their state government and as well as that particular committee, there must be a administrative committee. They should continuously monitor that particular systems, and that contractor should be held responsible. Now I will request you to communicate my words to the state government that that contractor should be made responsible. FIR against him for this negligence act should be lodged in the section 304, 306, and he should be arrested immediately because he is a heavy loss and negligence. Absolutely. And if this our Air Force Yes, can't be Mr. helped, Bhatnagar, please go ahead. Ji, because it's a great thanks we should give to the Indian Air Force, NDRF and SDRF, ITBP and state agencies that day and night they are doing the hard work. So we should thankful to them. But main culprit is the contractor. Main culprit is the body, that shrine board body of that particular area. And they should all be made responsible for that, and they should be penalized, heavily penalized. Otherwise, this type of things will go on. Again, it will happen. Again, people will make some hanky-panky business and will be continuously, it will be like that. No, we should not allow them. We should have a 3-agency audit. We should have continuous monitoring systems with the body, state government, collector, SP. They should be empowered. Already they are empowered. They should, at their own, they can check. They should have this audit system and reporting system. Then only, and they should not allow the people more than the capacity. Capacity is 4 people. So 1 and 2 child can be accommodated, but not at the time or the cost. 6 people, 5 people, no, they should not allow. And the people or the guard or the police who is deployed there at particular entry point, they should be taken into hard task. Why they have not checked? Why they have allowed more capacity people like that? So anyhow, I'm thankful to state government, to the your NDRF, to the state government, ITBP, and airports especially, because this is the only show of state government as well as these agencies like NDRF, your ITBP, and the Air Force. Air Force is the main thing, because in the future, so many suggestions are there. Experts can give their suggestions, and these things to be taken into care, like sky ladders. Then second is ballooning system. The heavy balloons are required there for this particular rescue operation. But the situation in that area, terrain is like that all these things we can't immediately deploy there. But slowly, wherever it is possible, we should do it. Anyhow, we should take care about it, and other safety belts, safety measure systems, and these things should be deployed there, so we can escape the life of the people. Anyhow, good operation is there. The people are taking care. I have seen in the TV channel. Right. So, everybody is doing a hard job. They are doing well job.
Right. Mr. Naveen Bhatnagar, thank you for taking the time out and for this very important conversation. As Mr. Bhatnagar was highlighting several lapses and several things which need to be fixed after this very, very tragic mishap that has taken place in Deoghar, Jharkhand. Still, 7 people are trapped. Our reporter was giving us update that it will take another 2 to 3 hours to rescue them.